Good evening and warm welcome to everybody. The FY27 Union Budget remained largely in line with expectations and can be viewed as a constructive roadmap oriented exercise rather than short-term market catalyst. The focus was well distributed across core pillars of the economy, that is infrastructure, manufacturing, and the services sector, clearly reflecting a longer-term growth vision. While the immediate market reaction may be muted, the budget's significance lies in the direction it sets. These announcements provide valuable insight into the government's strategic priorities, helping shape future market trends and offering investors a clearer framework to align their investments decision with the long-term opportunities. So let's understand from our experts what these key announcements are. Over to you, Arun. Thank you, Shrikant sir. So today we'll be talking firstly on the key aspects of the budget. Then we'll move on to the sectoral spaces, how some of the key sectors will get impacted from the budget. And then we'll also share our topics, and post that then we'll have a Q&A where you can share your questions and we'll try and answer those. Pankaj, can we move to the next slide, please? Yeah. Hi. So in this slide, we'll talk on the revenue side of the budget, where exactly, what the government has talked about in this budget from the revenue perspective. So in our view, this direct tax revenue growth, they have talked about at 12%, which includes 11% from the corporate side and 13% from income tax. We believe this would ideally be achievable, while the nominal GDP growth is estimated at 10%. So from that perspective, we believe, this more achievable number. However, the STT collection growth of 16% that they have factored in could have some downside. So that's something we have to watch out for going forward next year. In terms of indirect taxes, when you look at the indirect taxes show a growth of mere 2%. Now, in that, we see the CGST growth of around 6%, a custom duty growth of around 5%, and excise duty growth of 16%. Now, the higher excise duty growth is likely because of the increase in excise duty on cigarettes. The government, when you look at the net tax revenue, have been packed at around 28.7 lakh crore rupee, which is again a growth of 7% on a YY, 7% over the FY26 revised estimate. And the government has projected a non-tax revenue part here now, which is around 6.7 lakh crore. Now, just to highlight in this particular point, now this includes around 3.9 lakh crore dividends from and profits from the RBI. And last year, this number was 3.2 lakh crore. So this year they have budgeted 3.9 lakh crore in this 6.7 lakh crore. And another 1.2 lakh crore is from the telecom sector for license fee and spectrum usage charges. So these two form the majority part of the budgeted or the projected non-tax revenue of 6.7 lakh crore. Now, the government has also increased their divestment target from 33,800 crore last year to 80,000 crore. Now, that's a very steep increase that the government has announced. And we believe the divestment target from the government for FY27 to be on the higher side. When we look at the historical track record, which obviously has not been very encouraging in terms of divestment targets. Currently, we see IDBI Bank to be the only major entity in the divestment process. And if there's any meaningful miss in this divestment target, that may result in pressure on fiscal deficit, government borrowings, and also on the bond yield side. So we'll have to wait and watch how the government will be able to achieve this 80,000 crore. If they do it well and good, otherwise we could see some impact on the fiscal deficit. Next slide. Now, this is a pictorial form, basically representing, how the government gets their revenue. So on the left side, when we look at, we see corporation tax, we see income tax, and customs and union excise duties, and even GST contributing to the revenues.
Borrowings is around 24% for the government in terms of revenue side from where they are getting the revenues from. Next slide. Let's now focus on the expenditure. We already talked on where the government gets revenue from and what their targets or expectations are or budgets, for FY27. Let's see how they are looking to spend that money now. The government has budgeted a 8% increase in expenditure. Now, this comprises of 7% growth in revenue expenditure and a higher 12% growth in capital expenditure. Now, within capital expenditure, which is around 12.2 lakh crore rupees, defense forms around 2.3 lakh crore. Loan to loan for capex to states would be around 2 lakh crore. Then we've got housing, which is a 6% higher YOY, and railways again 10% higher YOY. So these are some of the key items within the capital expenditure which the government have budgeted for FY27. The government has continued to spend heavily on defense. While pushing states to do more capex now by providing higher finance, and the capex assumption, we see this to be broadly realistic in our view. If you look at the the revenue expenditure part, we talked on the capital expenditure, which saw budget growth of 12%. Now look at the revenue expenditure. There, the budgeted growth we talked about was 7% over FY26 revised estimates. The government has reduced year allocation to subsidies by 4% year on year. That's largely because of 8% decline in fertilizer contribution, and proposed a modest 4% increase in pay allowance and pension. Now, this is critical because the 8 Pay Commission recommendation and implementation would come going ahead, so which we believe would likely happen in FY28. So from that perspective, this 4% number, is critical to understand that. Next slide. Again, as we saw the pictorial form where, how the government has been spending or getting the revenues from, this represents the expenditure from the government side, where a majority of the money goes on state share of taxes, that's 22%. Interest payment is another big, expense for the government, which is around 20%. And then we have got central sector schemes, which is around 17%, and defense there 11%. So these are the key items where the government is looking to spend their money in FY27. Next slide. Let's quickly look on the fiscal deficit part as well, because that's a very critical number, and all the investors, both Indian and even the foreign investors, do keep a keen eye, how the government is looking to lower the fiscal deficit number. So the government has projected gross fiscal deficit to gross domestic GDP at 4.3% for FY27, which is around 17 lakh crore rupees. Now, this is in line with what our expectations were, and lower, in FY26 revised estimates, they're looking at 4.4%. So definitely the government is on the path of lowering fiscal deficit in FY27, though the quantum might not be very high, but still the government is looking to keep fiscal deficit under control. Now, again, we find this fiscal deficit targets realistic in the context of a moderate 10% nominal growth assumption that we are looking at. On the right hand side, if you look at the chart, these are basically figures for the last 3 to 4 years, including FY27 estimates as well, which talks about fiscal deficit, how it's come down from 6.5%, and next year the government is looking to budget around 4.3%. I'll stop here and hand over to call to my colleague. He'll talk on the capex part. Yeah, thank you, Arun. Good evening, everyone. So as Arun stated, that the capex in this budget is targeted to around 12.2 lakh crore, and we see a decent growth of around 12.2%. If you look at last 5-6 years, the capex has grown significantly. In fact, it has, and in the last 10 years, it has grown almost 6 times. So that numbers has been significant, and in the recent trend, we have seen railways and road was in focus earlier, where we had seen a strong double-digit kind of a growth in the capex allocation. But this year, the trend has shifted towards defense side, where we have seen a very strong 17% increase in the capex, and that stood at around 2.3 lakh crore. It is quite
evident that we see the geopolitical tension, and there are several the conditions around several geographies are not so conducive in terms of peace and humanity, and there we have seen a lot of wars are going on. And in that scenario, it is anticipated the government will increase the capex on defense side. And it's also a long-term vision to have to promote more of a domestic and manufacturing in defense sector. Uh, Apart from that, if we see the capex in railways, that is around 2.8 lakh crore, that increased by around 10%, and this includes. We have seen there are several rail corridors that has been announced, high-speed rail corridors, around 7 high-speed rail corridors been announced, plus freight corridors have been announced. So in that way, these are of course long-term project, but funding allocation has started from this year onwards, where we see 10% growth. Road is modest at around 8%, as in the past there was a large allocation. Now it's consolidating. Apart from that, if we see the PSUs also play a lot of role in capex. So when we include internal and extra budgetary resource, which includes your public uh, sector capex as well, then the power sector sees significant growth in the allocation, and roughly 18% growth we see in the power sector capex. And similarly, the new and renewable energy, which is very where the strong focus has been there for last few years, we see 19% kind of growth. So overall, this capex assumption that we see is more realistic in the current scenario, and it is around 4.4% of GDP. That is something which supports the long-term growth and GDP growth targets as well. I will stop here and hand over to Amit. Yeah. Next is the government has budgeted around gross borrowings of around 17.2 lakh crores. Now the government expects to finance this through market borrowings, including T-bills, national small saving funds, and a mix of cash balances, external assistance, and also state provident fund. हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हाई ग्रॉस बोरोइंग्स ऑफ 17.2 लाख करोड़ है टू पुट अपवर्ड प्रेशर ऑन यील्ड्स, दैट इज बॉन्ड यील्ड्स, और बॉन्ड यील्ड्स काफ़ी समय तक ऊपर रह सकते हैं. हमारा एक्सपेक्टेशन है कि CY 26 एंड CY 27 में जो बॉन्ड यील्ड्स है वो 6.65 और 7.15 की तरफ रहेगा. एंड हायर बॉन्ड यील्ड्स कैन लीड टू क्राउडिंग आउट इफेक्ट ऑल्सो. Also, the government for the first time is targeting a level of debt to GDP ratio rather than focusing only on fiscal deficit. गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि जो FY 27 का डेट टू जीडीपी रेशियो है वो अप्रोक्सीमेटली 55.6 रहे, और जो हमारा मीडियम टर्म टारगेट है अप टू FY 31 वो अराउंड 50% रहे. नेक्स्ट. इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन इस साल गवर्नमेंट ने टैक्सेशन में ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, बहुत ही मिनिमम चेंजेस किए हैं. जो मैट रेट है ऑन बुक प्रॉफिट्स दैट हैज़ बीन reduced फ्रॉम 14%, with MAT to be treated as final tax, and no new MAT credit would be allowed by the government. एक जो मेजर डेवलपमेंट हुआ है स्पेशली कैपिटल मार्केट के लिए, वो है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ऑन फ्यूचर्स. इट वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.02% टू 0.05% ऑफ द नोशनल टर्नओवर. और जो एसटीटी ऑन ऑप्शंस है इट हैज बीन इंक्रीज टू 0.15% फ्रॉम 0.1% ऑन द प्रीमियम टर्नओवर. This expected there was not so much expectation on the STT front, but this expectation has come as a surprise for us, and the market on the day of budget has taken it very negatively. लास्टली बायबैक कंसिडरेशन जो है इस जो कंसिडरेशन है
currently will be treated as capital gain versus it was treated as dividend earlier, with tax rate of 22% plus surcharge for companies as promoters and 30% for plus surcharge in case of individual promoters. Next. Lastly, we will look at how the valuation and outlook is. हम लोग काफी समय से देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट्स हैज अंडर परफॉर्म सिग्निफिकेंटली वर्सेस ग्लोबल मार्केट्स. दिस हम लोग इसको एक टेम्पररी ब्लिप मानते हैं, और ये टोन भी सेट करता है जो मल्टीपल्स को रीसेट करते हैं. हमने काफी सारा सेक्टर्स में देखा है कि मल्टीपल्स ऑलरेडी रीसेट हो चुके हैं. एफपीआई काफी एग्रेसिवली सेलर रह चुके हैं. जनवरी में उन्होंने बहुत ही ज्यादा सेलिंग किया है, अप्रोक्सीमेटली 50,000 करोड़. इसका दो रीजन ये भी हो सकता है कि उनको हमारा मार्केट अट्रैक्टिव नहीं लगता है और बाहर का मार्केट ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है. और एक रीजन ये भी हो सकता है कि हमारे इंडिया में हाईटेक कंपनीज की जो कमी है उसके वजह से भी एफपीआई का इन्वेस्टमेंट फ्लो कम है. इस समय हमें ये देखना है कि डोमेस्टिक का म्यूचुअल फंड्स अभी भी एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स के बिहाफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं. इन्वेस्टमेंट बिहेवियर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स हमें यहाँ से देखना पड़ेगा, यहाँ अगर वो कंटिन्यूसली एग्रेसिवली यहाँ से इन्वेस्ट करते रह रहे हैं या फिर अपना परचेसेस reduce कर रहे हैं, which will be very critical for the Indian market given the negative view of FPIs on India and which may extend for some more time. ओवरऑल हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं स्टेबल अर्निंग्स एंड बेटर आउटलुक फॉर इंडियन मार्केट्स इन FY27 एंड FY28. Q3 FY26 का जो अर्निंग्स है वो एक्सपेक्टेड लाइंस में आया है, और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाके अर्निंग्स आउटलुक काफ़ी स्टेबल है. हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो FY27 में अर्निंग्स है वो अप्रोक्सीमेटली 16.6% से ग्रो होगा, विद EPS ऑफ 1252 फॉर द निफ्टी, एंड 14.5% से ग्रो होगा इन FY28 विद EPS ऑफ 1436. And the Nifty at current levels is trading approximately at 20 times FY27 and 17 times FY28. With headwinds of FII extending their selling in India, we are cautiously optimistic on Indian markets with the expectation of 6.5% GDP growth in FY27 and similar growth in FY28 as well. Over to Sumit. Thank you. If you look at the key takeaways from the budget is that, or to summarize what has been discussed, budget stayed on the fiscal consolidation. सबसे important point ये रहता है कि गवर्नमेंट आउट ऑफ ग्रोथ को पुश करने के लिए ज्यादा डेट तो नहीं ले रही है. ज्यादा डेट लेगी तो इंटरेस्ट कॉस्ट बर्डन बढ़ जाएगा और करेंसी डेप्रिशिएट होती रहेगी आपकी. सो मार्केट, बॉन्ड मार्केट पर्टिकुलरली काफी फोकस करता है इस पॉइंट पे कि फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ पे है कि नहीं. सो दो द पेस हैज मॉडरेटेड. क्योंकि रेवेन्यू कंस्ट्रेंट्स है. आपने देखा इनकम टैक्स बेनिफिट दिए, जीएसटी कट किए गवर्नमेंट ने, तो रेवेन्यू पे थोड़ा तो स्ट्रेन आना ही है. रियलिस्टिक हमको लगता है जो टैक्स रेवेन्यू के टारगेट दिए काफी रियलिस्टिक है. वी मेंटेन नॉन टैक्स रेवेन्यू वर्सेस FY26 रिवाइज्ड एस्टिमेट. और डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट जो दिए हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं हमको अचीव करना. काफी सब्सटेंशियल अमाउंट गवर्नमेंट ने बिल्ट इन किया है. ये नॉर्मल वे से तो अचीव नहीं हो सकता है, तो गवर्नमेंट हैज टू कम आउट विद अ डिफरेंट स्कीम ऑफ थिंग्स, उसी से कुछ अचीव हो पाएगा. ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी है वो अराउंड 4.3%. वो अंडरपाइंस कहती है कि फिस्कल प्रूडेंस एट ए मॉडरेट पेस. Spending growth remains modest, maintains focus on capex. Now FY26 का जो capex हाईलाइट किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज गवर्नमेंट capex करेगी तो जीडीपी को बूस्ट मिलता है. प्राइवेट capex के लिए वेट कर रहे हैं, इसमें इंसेंटिवाइज करा है, जैसे डेटा सेंटर्स की बात करें,
और भी सेक्टर्स में, तो गवर्नमेंट वांट्स प्राइवेट टू आल्सो इंक्रीज द केपेक्स, बट गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट केपेक्स इज एक्सपेक्टेड टू गो अप बाय 12%, which is quite a decent number. Interest rates likely to remain elevated. GSEC अराउंड हमारे को ऐसा लगता है कि FY27 में 6.65 से 7.15% पे रहेगा. Gross market borrowings at 17.2 lakh crores for FY27 versus 14.6 lakh crore rupees for FY26. तो गवर्नमेंट थोड़ी बोरिंग्स बढ़ेगी. नेक्स्ट प्लीज. Now coming to sector specifics, telecommunication sector, it tax holiday to any foreign company until 2027 that provides cloud services globally using data center services in India. So it is incrementally positive for Tata Communication and Bharti, which provide services to data centers set up by hyperscalers. मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाना चाहूंगा हो क्या रहा है. दिस इज रेलिवेंट फॉर आईटी सेक्टर ऑल्सो. द यूनियन बजट ने जो प्रपोजल रखा है कि हम टैक्स हॉलिडे देंगे 2047 तक फॉर ग्लोबल क्लाउड प्रोवाइडर्स. अब ग्लोबल क्लाउड प्रोवाइडर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, जस्ट टू हाईलाइट फ्यू, टू ऑफर क्लाउड सर्विसेज वर्ल्ड वाइड. आप ये कंपनी आओ, आप ग्लोबली डेटा सेंटर क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करो, बट थ्रू इंडिया बेस्ड डेटा सेंटर्स, तो आपको हम टैक्स इंसेंटिव देंगे. काफी लोगों को ये नहीं मालूम है कि काफी मेजर इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं इंडिया में डेटा सेंटर्स में. सो हाईलाइटिंग द फोकस ऑन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. गवर्नमेंट सेड डेटा सेंटर्स, particularly AI data centers, I'm referring again, particularly AI data centers play a critical role in the infrastructure layer of the AI architect. Government said that investments of around 70 billion US dollars, I repeat, government ने बताया है कि 70 billion US dollars all which is already in the pipeline with announcement of investment of around 90 billion US dollars. So इन सबको और इंसेंटिवाइज करने के लिए आपकी बहुत सारी फॉरेन कंपनीज आए, इन्वेस्ट करें इंडिया में डेटा सेंटर पे, तो इसके लिए एनकरेजमेंट किया गया है बाय टैक्स हॉलीडेज. और एक और इम्पोर्टेंट, अगर आपने वर्ड पढ़ा होगा फॉर फॉरेन कंपनीज, कि इनको सबको सेफ हार्बर भी दिया जा रहा है. अब सेफ हार्बर क्या मीनिंग होता है इसका? बेसिकली मतलब है कि आपको कंपनीज को, सच कंपनीज प्रोवाइड सर्विसेज टू इंडियन कंपनीज. A safe harbor of 15% on cost has been proposed where the data center service providers in India is a related party. So आप इसको लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क में देखेंगे तो ये बहुत सही डायरेक्शन में जा रही है गवर्नमेंट. डेटा सेंटर इज द फ्यूचर, और इंडिया का 95% डेटा अब्रॉड में है. अगर यहाँ पे अपन इंसेंटिवाइज करते हैं कि बड़े कंपनीज इन्वेस्ट करेगी इंडिया में, तो वी विल क्रिएट बिग इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, काफी जीडीपी को सपोर्ट करेगा. एक नई इंडस्ट्री क्रिएट हो जाएगी. मोर इंपॉर्टेंट, एक नई इंडस्ट्री क्रिएट हो जाएगी. नेक्स्ट प्लीज. हाँ, कमिंग टू आईटी सेक्टर, जैसा कि बताया कि बायबैक आया है, तो बायबैक जनरली सीन फ्रॉम आईटी कंपनीज, बिकॉज आईटी कंपनीज काफी सिग्निफिकेंट पोर्शन में भी 80%, 90%, 100% ऑफ द प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, इधर बाय वे ऑफ डिविडेंड और इधर बाय वे ऑफ बायबैक्स. तो ये काफी पॉजिटिव है. बायबैक टैक्सेशन अलाइन विद कैपिटल गेन रेजिम एंड डिफरेंशियल रेट फॉर प्रमोटर्स. So 22% for promoter companies and 30% for promoter individuals. ये सेफ हार्बर मैंने आपको बताया. तो इसमें दूसरी चीज क्या हुई, पहले 300 करोड़ का ही था, अभी वो थ्रेशोल्ड इंक्रीज करके 2000 करोड़ रुपीस कर दिए. सो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव. और डेटा सेंटर, जैसे मैं आपको बताया, ये काफी लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है इंडिया के लिए, और यहाँ पे काफी इन्वेस्टमेंट आने वाला है इसके चक्कर में. नेक्स्ट प्लीज. Okay, thank you, Sumit. So next sector is pharma healthcare. So यहाँ पे जो whatever announcement came in the budget, so there are few announcement और announcement positive है sector के लिए, pharma के लिए.
सो गवर्नमेंट ने काफ़ी फोकस किया है बायोफार्मा स्पेस में. So in the biopharma Shakti initiative, with the total outlet of 10,000 crore to be incurred in the next 5 years, it will transform the India into the global hub for a biopharma and enhance the focus on the research, innovation, domestic manufacturing, the biological and biosimilar. This would include the establishment of three new National Institute of Pharmaceutical Education and Research, and also upgradation of 7 existing units. So it will be a minor positive for the pharma companies like which the companies who focus in the biologic, such as Aurobindo, Biocon, Dr. Reddy's, Lupin, and Syngene, and Zydus. Also, the government has announced the upgrade of existing Institute of Allied Healthcare health profession, alongside establish of new allied health professional institution in the both public and private sector. And this initiative to cover 10 selected discipline. So the goal is to add 1 lakh allied health professional over the next 5 years. And इसका impact ये होगा better sourcing of qualified medical talent, both doctor and nurses for the hospital. ये एक इंटरेस्टिंग है announcement which is support state in the creating an integrated large scale health complexes with the specific focus on the enhancing the regional connectivity for the international patients. So basically it's a medical tourism. So this project on the collaboration with the private healthcare provider to build and manage these facilities. So this will इसका impact ये होगा कि this could be help to attract the more international patients and who typically generate the higher revenue for the occupied bed. So basically जितने भी listed branded companies हैं, जो branded hospitals हैं, उनको benefit मिलेगा. Next is announcement is the government has reduced import duty on the 17 drugs and medicine used for the treatment for the rare disease. And so indirectly company को इतना impact नहीं पड़ेगा, but the limited impact on the pharma and hospital companies as their benefit likely to pass on the patients. So over to Arun for the next sector. Yeah, thank you, Amar, again. So let's talk on autos now. Autos में देखो कोई ऐसा बहुत बड़ा बिग बैंग अनाउंसमेंट नहीं था जिससे कि बहुत मैसिव इम्पैक्ट होगा. बिकॉज ऑटोज में जनरली आप देखेंगे तो पहले एक्साइज ड्यूटी हुआ करता था, फिर उसके बाद जीएसटी में हुआ है, जो कि जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट लाता है ना. जीएसटी का तो रेट कट ऑलरेडी गवर्नमेंट ने सितंबर में दे दिया था, जिसकी वजह से वी हैव सीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिकअप इन ग्रोथ इन फैक्ट इन दी ऑटो स्पेस. बट जस्ट एक हाईलाइट कर देता हूँ कि इनमें क्या क्या अनाउंसमेंट्स आए थे. एक तो पीएलआई स्कीम एलोकेशन वो इंक्रीज हो गया है 2090 करोड़ से लास्ट ईयर से टू 5900 करोड़ दिस ईयर. और सी मेजोरिटी ऑफ ये अलॉटमेंट है ना, ये डेफर हुआ है 26 से 27 में, एंड दिस डेफरमेंट लार्जली वाज नोन टू मार्केट पार्टिसिपेंट. इसलिए कोई बहुत मैसिव वी डिडंट सी एनी बिग रैली बिकॉज ऑफ स्कीम एलोकेशन. और केपेक्स जो गवर्नमेंट कर रही है, जो कि हम कई बार बात कर चुके हैं केपेक्स की, उसका फायदा हमेशा एक ट्रक सेगमेंट को हमेशा होता है. सो दैट्स अ स्मॉल पॉजिटिव फॉर द ट्रक सेगमेंट. इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात की है, जहां पर वो 4000 ई बसेस देंगे. तो वहां पर बस प्लेयर्स जो है वहां पर एक उनको फायदा होता है. बिग नेम्स में है टाटा मोटर्स है, अशोक लेलैंड है. स्मॉलर नेम्स इन द सेंस कि वो काफी ईवी जो करते हैं उनमें ओलेक्ट्रा है या जेबीएम ऑटो है. But again, 4,000 buses is not a huge number when you look at the overall context. So एक small opportunity है. इसके अलावा एक कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन मिला है, फॉर कंसेशन मिला लिथियम इयॉन बैटरी बीएसएस में. वहां पर भी हमें ये जो ईवी का पूरा अडॉप्शन है वहाँ थोड़ा वो करने में मदद करेगा. नेक्स्ट स्लाइड. होटल्स में भी कुछ अनाउंसमेंट किया है. ऐसे देखिए जो इंडिया का जो टूरिज्म सेक्टर है वो बहुत अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है. एक तो फॉरेन इनकम आता है अगर बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं, दैट आल्सो इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, एंड लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है. सो गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ स्टेप्स ये बजट में अनाउंस किए हैं, जिसकी वजह से दे वांट मोर फॉरेन अराइवल्स. The government has talked about developing 15 archaeological sites into experimental cultural destination. So, this bodes overall positive for the tourism infrastructure. They've also proposed to set up National Institute of Hospitality, जहाँ पर pilot scheme में they'll be upskilling around 10,000 guides. So that's again, I think it's a good positive move from the government side that should address this, HR constraint that we face a lot of time when we actually, in terms of this entire hospitality sector.
The government has also proposed to reduce TCS rate on sale of overseas टू program package. पहले 5% था, वो अभी 10 लाख के लिए, और वो 20% था बियॉन्ड 10 लाख के लिए, वो 2% कर दिया है। अभी कोई अमाउंट नहीं है अभी इसमें कैटेगराइज करने के लिए। सो ये फॉरेन कॉस्ट ट्रेवल को भी कम करेगा थोड़ा सा। So all these are some positives. Hotels, we broadly we are positive, and we see sector has got room to growth room going forward. So that's it. I think I'll hand over the call to Pankaj. Yeah. थैंक यू अरुण। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा मैंने पहले डिस्कस किया कि केपेक्स पे काफ़ी फोकस है बजट में, और इस बार हमने देखा है कि बहुत सारे नए सेगमेंट है वहाँ पर फोकस रहा है, लाइक डिफेंस में। उसके अलावा अगर निटी ग्रिटीज में जाए, जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को इम्पैक्ट पॉजिटिवली या उसका इम्पैक्ट एक दिखता है, वो एक न्यूक्लियर पावर सेक्टर है, जहाँ पर एक बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशन किया गया है। एंड दिस इज फॉर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, जो उसमें रिक्वायरमेंट होता है फॉर सेटिंग ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स। तो गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस रहा है ऑफ लेट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेकर भी गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं। सो इन दैट वे इसमें जो बेनिफिशियरी हमें दिखते हैं वो एल है, BHEL इज देयर, HCC इज देयर, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन इज मोर ऑफ अ सिविल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, एंड BHEL is more of a equipment, and L&T overall EPC. Railways, as I said, railways में there's a 11% growth जो capex का announcement किया गया है, and there are several rail corridors which has been announced in the budget. 7 जो नए रेल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात हुई है, तो इसकी वजह से काफ़ी थ्रस्ट मिलेगा रेलवेज में केपेक्स को लेकर। और इसके अलावा रोलिंग स्टॉक्स की भी जो बात की गई है, न्यू लाइंस की बात की गई है। सो दिस विल हेल्प इन, आई मीन ओवरऑल जो केपेक्स है 2.9 लाख करोड़ का, एंड जो ग्रोथ है 11%, इसकी वजह से जो कंपनीज पॉजिटिवली इम्पैक्टेड होंगे वो लाइक CG पावर, टेक्समैको, टीटागढ़ रेल, अपार्ट फ्रॉम द अदर EPC प्लेयर्स। सिग्नलिंग में भी एक स्पेंडिंग इंक्रीज किया गया है, करीबन 7,500 करोड़ का स्पेंडिंग की बात की गई है, एंड दैट हैज मॉडरेटली इंक्रीज, एंड इट विल हैव अ मॉडरेट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन CG पावर, सीमेंस, KEC एंड केन्स। डिफेंस का जैसा मैंने पहले भी बात की, डिफेंस एलोकेशन इज नाउ अप बाय 17% इन दिस 27 बजट, एंड इट इज अराउंड 2.3 लाख करोड़। इसमें जो बहुत सारे इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर इक्विपमेंट है, वहाँ पर जो जो प्रोक्योरमेंट के लिए जो एलोकेशन है, दैट हैज इंक्रीज अराउंड 62%, एंड इट हैज कम टू अराउंड 82,000 करोड़ फॉर FY27. So in that way, the players who are into electronics, missile, drone, and ammunition segment will be positively impacted, and so players like BEL, Data Pattern, Solar Industries, Astra Microwave, they will be beneficiary due to this. उसके अलावा जो कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई है कि करीबन 10,000 करोड़ एलोकेट किया गया है टू क्रिएट globally competitive container manufacturing ecosystem, and this will be over next 5 years. So in that way, it's a long-term plan which will be positively impacting players like Concor, as it will reduce the overall procurement cost. जल जीवन मिशन, ये जो सेगमेंट है, यहाँ पर लास्ट 2 years में ओवरऑल जो EPC players who are into the जल जीवन मिशन project, they have faced issues in terms of payment, and players like L&T, KEC, Kalpataru, they've got impacted because of the payment issues. So इस बजट में करीबन 67,600 करोड़ का एक एलोकेशन किया गया है बजट का. However, it is similar to what we have seen in FY25, but hopefully this should be spent in this current financial. In that way, the working capital of these players will eased. नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है, यहाँ पर बजट में काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा है, और इसमें एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का जो गवर्नमेंट का फोकस है, एंड ओवरऑल पिछले सालों में हमने देखा है कि PMI स्कीम जो अनाउंस हुए हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो सेमीकंडक्टर मिशन है इंडिया का, ये अनाउंस किया गया था. तो पूरा फोकस गवर्नमेंट का है to create a domestic ecosystem for the electronics manufacturing and the semiconductor manufacturing.
तो ईएमएस का इसमें जो एलोकेशन है करीबन 40,000 करोड़ से किया गया है vis-a-vis what we have seen in 23,000 crore in last year. So in that way, it's quite a substantial increase. And there are some 249 applications who are applied under the component scheme, and they will be getting approvals, and they will get benefited with this allocation. So players like Dixon, Amber, Sirma, and Keynes, they will be benefited with this. उसके अलावा बजट में एक स्टेप फर्दर हम गए हैं इन द सेमीकंडक्टर मिशन में ISM 2.0 which is announced, and the initial capex initial outlay is around 1,000 crore, and over a long period it will have a positive impact on the players in the EMS space like Keynes and CG Power. They are into getting into semiconductor manufacturing. So this is all from my side. Over to Rini for chemicals. Thank you, Pankaj sir. So coming to specialty chemicals, the government has announced three dedicated chemical parks with an initial allocation of 600 crores. So if this is executed well, this can improve infrastructure, reduce logistics cost, and enhance competitiveness of the Indian manufacturers, I mean Indian chemical manufacturers globally. So structurally, it is structurally positive for the sector. There's also a customs duty reduction on certain capital goods used in lithium-ion cell manufacturing for battery usage, for battery energy storage systems. So that's supportive for battery chemical players like Gujarat Fluoro and Neogen Chemicals, as it strengthens the overall battery ecosystem in India. And lastly, basic customs duty is expiring on alpha pinene and maltol. This could be beneficial for Privi Organics because of imports of alpha pinene becoming more expensive for competitors. It improves Privi's competitive positioning. Plus, they are also planning to manufacture maltol, which adds another growth lever. So that's it from my side. Over to Veer. Yeah, thank you, Reading. Hello to all. A very good afternoon. Financial services की अगर हम बात करें, so STT is certainly have stolen the show. So STT में if we see on options, the rates have been increased to 0.15 from 0.1% of premium. And the STT on futures have been increased to 0.05 from 0.02%. Now, this firstly certainly would increase the cost of trade for the traders, and therefore in the near term we might see an impact on the volume of trades into the market. Also, एक sentimentally shift होता है negative as we have seen in the past couple of days, and when also the market falls, people look at the returns, and that also indirectly impacts the volume of trades going into the market. So like short term, we can see that negative impact. But if we also look at the long term data, we don't find a very strong correlation between STT and the volume of trade. Yes, we don't have a very long history to have a very strong correlation, and therefore it will be very interesting to see in the medium term how this will actually pan out and how the numbers of volumes would actually come in the medium to long term. But yes, in the short term, this is certainly a headwind for the capital market stocks, and therefore they have been in the focus of in the past couple of days. The next update is on the extension of loan guarantee scheme to working capital loans. This is particularly to the micro, small, and medium enterprise businesses. So obviously, lenders who are exposed to this particular segment of micro, small, and medium enterprise would be beneficial. Interestingly, if you look at the past 8 to 10 quarters, ये जो segment has been particularly doing very well. इसका growth काफी अच्छा आ रहा है, and this segment has been driving the overall credit growth of the entire industry. And therefore, a lot of players have now entered into this particular segment. And sector-wise, it's actually a good news. And a lot of lenders and NBFCs would be benefited from this scheme. Finally, as Sumit sir told, explained into his slide that the gross market borrowings in the next financial year is expected to be 17.1 lakh crore, which is materially higher on a YOY basis. So now what a high market borrowing does is that
this would increase the bond yields into the market. Now, what happens when bond yields go up is that there are multiple implications. Number one, for non-banking financial companies is that their incremental cost of funds can actually go up, and therefore this can impact the margins for NBFC. Next slide, please. So this is negatively for NBFC on this front. But what increase or bond yields also does to life insurance companies is that they help them in a positive way. So when yields go up, the rates which you get on your non-par policies, they go up. And therefore the demand for non-par can potentially go up. And non-par जो segment होता है, these are margin accretive segment. So for life insurance company, this could actually be positive. And at the same time for NBFCs, this could actually in an incremental way is a little negative. And finally, what also the increase in bond yields does is that we know there's an inverse relation between bond yields and bond prices. So when bond yields go up, the bond prices falls. And a lot of जो banks होते हैं, they have a big MTM book where they invest into bonds market. So उनके bond prices go down and therefore they get MTM losses into their book. So banks के लिए from an MTM point of view थोड़ा negative हो जाता है. और जो PSU banks है historically hold more bonds than private banks. So उनके लिए particularly it's a little bit more on a negative side. So these were some of the important BFSI updates. So to conclude, these are some of our top picks from across the sectors. At a point like this, when there is a lot of market uncertainty and news flow going on, we would recommend sticking to high quality names with strong fundamentals and margin of safety. And these are some of the stocks which fulfill that criteria pretty well. Particularly financial services and information technology is something which we like and can give you decent returns in the medium term. And if your goal is long-term perspective, these are all the quality names which you can add on dips like we are experiencing. That's the presentation from our end, and I think we can take the Q&A now. Thank you, Veer. We have opened the floor for Q&A. You guys can drop your questions in the chat box. Starting with some of the questions we already have. So one participant is asking for view on Tata Motors and Tata Steel. So I think Arun sir and Amarjeet can take this question one by one. Sure. Yeah, so in Tata Motors, I'm not sure you're looking at Tata Motors or Tata Motors PV, but Tata Motors passenger vehicles, we are not positive. While the domestic car volumes have come very strong this month in January, but GLR is something a bit of concern to us, and hence we are not positive on Tata Motors passenger vehicles. But coming to Tata Motors, which houses the commercial vehicle business, there we are positive. After a good amount of time, actually, we are seeing some recovery happening in the commercial vehicle space, and the volume growth has been decent. Even January numbers were pretty good. 3Q was good. The GST rate cut have provided some momentum there. So yes, Tata Motors, we are positive. One can look at adding the stock on corrections. The market is providing opportunities here. So yeah, from a medium-term perspective, one can add the stock. That's for Tata Motors, which houses the commercial vehicle business. Amarjeet, you can talk on Tata Steel. Yes. So on the Tata Steel, we have a sell rating, and we feel that on the current price, the risk reward is not favorable because there are a lot of reason for that. अगर हम देखें तो prices realization substitute है, coal cost बढ़ा हुआ है. We in the going ahead we expect the margin pressure. जो टाटा का कैपेसिटी एक्सपांशन है अभी कोई डिक्लेयर नहीं किया है, और जिसकी वजह से ग्रोथ आने के चांसेस बहुत कम है आगे जाके. देयर इज नो क्लैरिटी ऑन दैट. हेलो, सॉरी. Okay. ओके. तो ग्रोथ आने के चांसेस बहुत कम है बिकॉज जो भी अभी करंट कैपेसिटी एक्सपांशन हुआ है, केपीओ टू रैंप अप जब फुल्ली हो जाएगा तो उसके बाद ग्रोथ का देयर इज नो क्लैरिटी ऑन दैट बिकॉज देयर इज नो कैपेसिटी अनाउंसमेंट. एंड वी नो दैट लॉसेस इन द यूके, द यूरोपियन, सो यूरोपियन मार्केट कंडीशन इज नॉट गुड एंड यूके लॉसेस कंटिन्यूसली है, और उसके वजह से अर्निंग पूरा डाउनग्रेड हुआ है. सो कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स, रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट फेवरेबल एंड वी सी द डाउनसाइड, एंड वी हैव अ फेयर वैल्यू ऑफ 145 rupees. Thank you, Amarjeet. The next question is from Dheeraj Pal. He's asking, sir, government has also spent on ports and
still Adani Ports has fallen. So, Amit sir, would you like to share your opinion on this? Yeah. See, the total allocation for Ministry of Ports, Shipping and Waterways is around 5,200 crores, which is almost 50% increase over the previous year. Now, this money would be primarily spent on improving infrastructure at government ports and improving hinterland connectivity of government ports. So this will in fact increase competition for Adani ports and is marginally may not be very negative, but it will enhance competition for Adani ports going forward. As far as Adani Port is concerned, the price performance of Adani Port will be completely dependent on the financial performance of the stock, which has been very strong for the last many quarters, and we continue to like the stock. And we have a buy rating on the stock with a target price of 1780. Thank you, Amit sir. Next question is on the budget itself. So Ajay Srivastav is asking, explain buyback with an example to understand. So I will ask our analyst Sumit Pokharna to help with this. If you look at the buyback provisions, am I audible? Yeah. So if you look at the buyback provisions, the government has done a really good job for minor shareholders. I mean to say shareholders which are not promoter, who does not fall under promoter category. See, currently आज की डेट में क्या हो रहा है, जो भी बायबैक हो रहा है उसके जो प्रोसीड्स आते हैं उसको आपको ग्रॉस बेसिस पे डिविडेंड मान लिया जाता है। उसको डिविडेंड माना तो कंपनी के को बोला हुआ है कि जो भी डिविडेंड अनाउंस करोगे आप उसके ऊपर आपको टीडीएस काट के देना है। तो आपके सेल प्रोसीड, सपोज आपने इन्फोसिस का शेयर है या कोई भी एक शेयर लिया जिसमें बायबैक चल रहा है, उसके ऊपर आपने बायबैक में अपने शेयर को सरेंडर किया, तो जो भी प्रोसीड्स आई, सपोज 1000 रुपीज प्रोसीड्स आई, तो उसके ऊपर टीडीएस कट के आपको पैसा हाथ में आएगा। अब ये तो आपका प्रॉफिट नहीं है, ये तो आपका सेल प्रोसीड्स है, आपकी कॉस्ट भी है साथ में। वो कॉस्ट को गवर्नमेंट बोलती है उसको कैपिटल लॉस मान लो आप, और उसको आप कहीं कैपिटल गेन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लीजिए। बट ये स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए इट वाज नॉट वेरी अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन। तो फ्रॉम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब 1 अप्रैल 26 से ये जो बायबैक होगा उसको अगेन कैपिटल गेन माना जाएगा, और देयर इज ए मटेरियल रिडक्शन इन टैक्स कॉस्ट इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर नॉन प्रोमोटर शेयर होल्डर्स। सो इसका क्या मतलब है कि ये स्मॉल शेयर होल्डर्स, नॉन प्रोमोटर शेयर होल्डर्स के लिए गवर्नमेंट ने काफी अच्छा एक टैक्स स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है। बट इसका इम्पैक्ट प्रमोटर पे देखा जाए तो प्रमोटर के केस में टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। जो इफेक्टिव टैक्स लाइबिलिटी उसके ऊपर आ रही है वो ज्यादा टैक्स रेट हो गए, मतलब ए हायर इफेक्टिव कैपिटल गेन टैक्स रेट एप्लीकेबल टू प्रमोटर्स। सो राइट वर्ड टू बी यूज्ड इज इफेक्टिव कैपिटल गेन टैक्स रेट। जनरली अपने को मालूम है कि कैपिटल गेन टैक्स लॉन्ग टर्म 12.5% है, बट प्रमोटर डोमेस्टिक कंपनी है और उसने बायबैक में पार्टिसिपेट किया है तो एडिशनल 9.5% टैक्स लगेगा, तो इफेक्टिव टैक्स रेट 22% हो जाएगी। सो शॉर्ट टर्म शेयर होल्डर्स के लिए That was quite useful, Sumit sir. Now, due to time constraint, we will move on to the closing comments from Shrikant sir. Shrikant sir, would you like to speak something? Oh yes. See, like markets have like fallen yesterday on the back of specific news that STT has increased, and because of that, the market, which was trading around 25,100, 200, fell to the levels of 24,600. Today we saw subsequent sell-off, but the best part was that we saw higher bottom sort of formation and we saw recovery towards the end.
So while looking at the sentiment of the market, yes, certainly it has impacted to the overall performance of the market. But while looking at the announcement, I think it is very clearly mentioned that it is for curbing the excessive speculation which is happening on the FNO segment, and for that government is taking the effective measures. So one thing is very clear that it is not going to impact to the longer term health of the market. In the near term, certainly it is negative, but in that also, if as I have time, this particular process will start from 1st of April and not from immediate onwards. So बहुत टाइम है, 1 अप्रैल से ये इम्प्लीमेंट होगा। तब तक जितने भी, और क्या होता है ना, ये सेगमेंट में फ्यूचर साइड में एफआईएस की पोजीशन ज्यादा होती है, तो दे विल टेक appropriate action on their positions based on this news flow, so they have enough time to go through with their positions and manage their positions. तो वो एक मुझे लगता है कि आज मार्केट में उसे पॉजिटिवली लिया है और मार्केट में एक हायर बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना है। तो मैं यही कहूंगा कि ये जो मार्केट है, इस मार्केट में बहुत सारे अनसर्टन न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं, और बिकॉज ऑफ दैट मार्केट में कंफ्यूजन है वो बढ़ते जा रहा है। और ये जो अनसर्टन न्यूज़ फ्लो होता है, वो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, बिकॉज अनसर्टन न्यूज़ फ्लो में मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम गिरता है, अच्छा खासा गिरता है और बड़े लेवल्स आते हैं। ऐसे मार्केट में अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स अगर करते हो, या तो अगर आप कोई एटीएफ में या कोई म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, उसके रिटर्न्स ओवर द पीरियड डेफिनेटली अच्छे ही आते हैं। तो शॉर्ट टर्म में ये कंसिस्टेंटली चल रहा है। या तो कभी यूएस से कुछ न्यूज़ फ्लो आता है, या तो कभी अपनी करेंसी वीक हो रही है। तो ये सब न्यूज़ फ्लो में मार्केट में जो मार्केट की जो हेल्थ है वो धीरे धीरे और डिटोरिएट हो रही है। लेकिन ये मैं कहूंगा कि ये शॉर्ट टर्म है। लॉन्गर टर्म अगर आप देखेंगे तो मार्केट के वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं। हमने कमोडिटी में एक बड़ा सेल ऑफ देखा है, और कमोडिटी में भी जो रैली थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, बियॉन्ड एनीवंस इमेजिनेशन थी, और इसी वजह से उसका जो करेक्शन भी आया है वो इक्वली स्ट्रांग है। अब हमें लगता है कि वहां पे भी थोड़ी स्टेबिलिटी आ सकती है, और उसका पॉजिटिव इफेक्ट इक्विटी पे आ सकता है। तो हमारी राय यही रहेगी कि आप ऐसे मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, लॉन्ग टर्म व्यू के साथ इन्वेस्टमेंट्स कीजिए विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू। हमें भी लगता है कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। ये मार्केट में अ, जो एक पॉजिटिव रीजन आने वाले दिनों में आ सकता है वो है टैरिफ से रिलेटेड न्यूज़ फ्लो। और अगर टैरिफ से रिलेटेड न्यूज़ फ्लो अगर कभी भी अगर आता है, अगर पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो अगर आता है, यानी कि अगर कुछ भी अगर हम डील कर लेते हैं यूएस के साथ, तो फिर उस वक्त हमें लगता है मार्केट में एक अच्छी तेजी हमें देखने मिलेगी। बट शॉर्ट टर्म हमें लगता है वॉलेटाइल रहेगा, और ये वॉलेटिलिटी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है फॉर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि 24,500 600 के लेवल्स हमने देख लिए हैं। अगर बहुत ही पकड़ लेते हैं कि वर्ल्ड मार्केट्स में अगर सेल ऑफ आ जाता है, तो उसके बेसिस पे शायद हमारे मार्केट्स में भी हमें वीकनेस देखने मिल सकता है। तो वर्स्ट केस में हमें लगता है 24,000 आ सकता है वर्स्ट केस में, और 24,500 के नीचे अगर गया मार्केट तो वर्स्ट केस में 24,000 आ सकता है, लेकिन शॉर्ट लिव्ड रहेगा। मार्केट वापस रिबाउंड करना चाहिए, ऐसे ही लग रहा है। और 25,500 के ऊपर हमें लगता है कि मार्केट की हेल्थ जो है वो और इम्प्रूव हो सकती है। तो फॉर द टाइम बिंग 24,500 25,500 इस रेंज में हमें लगता है कि मार्केट ट्रेड करते हुए दिखेगा। और ओवर द पीरियड हमें लगता है कि बाय द एंड ऑफ लेट्स से दिस ईयर कैलेंडर ईयर 2026, हमें लगता है कि मार्केट में बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने मिलेंगे। तो कोई भी करेक्शन अगर आ रहा है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है फॉर इन्वेस्टिंग विद अ लॉन्ग टर्म व्यू। ये एक हमारा फाइनल रिमार्क है। That's all. Thank you, sir. And with that, we have reached the end of today's webinar. Thank you all for joining us. Thank you.